Juliet Radhika Nomlers reporting. Nice. I honestly feel paragliding came to me rather than me going to paragliding. कभी भी मेरे bucket list में नहीं था to fly. In fact, मुझे पता भी नहीं था कि there are proper associations or schools जो paragliding सिखाते हैं. First time when I got to know that there is a course is through Arjun Vajpayee when I was in Manali. I shifted to Manali back then और अर्जुन ने पूछा था मुझसे कि कोई instructors है या नहीं paragliding के. उसके बाद मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो देखी थी जो ये है सोलांग में एंड आई वाज लाइक दिस लुक्स अमेजिंग. स्लोली एंड ग्रेजुअली आई मेट सम इंस्ट्रक्टर्स इन बुरवा जहाँ पे मैंने पैराग्लाइडिंग फर्स्ट टाइम की थी और उसके बाद मुझे बहुत कुछ पता चला कि आप पैराग्लाइडिंग से हाइक एंड फ्लाई कर सकते हो, स्की एंड फ्लाई कर सकते हो विच इज कॉल्ड स्पीड फ्लाइंग. राइट देन आई न्यू दिस इज माई कप ऑफ टी. सो वेलकम टू माई पैराग्लाइडिंग जर्नी जहाँ मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि अगर आप फ्लाई करना चाहते हो एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम a pilot, how you can do so in just 4 days. Now paragliding is a very recent sport. I think ये as early as 1990s में develop हुआ था और इसकी पहली एसोसिएशन बॉडी 2009 में आई थी जो है APPI. APPI is the International Association of Paragliding Pilots and Instructors, which is a united education system. जैसे आप में से कुछ लोगों को पैडी के बारे में पता होगा जो एक united education system है of scuba diving. You get certification with every level you clear, which means you have to meet the standards described in their education system such as skills, knowledge, emotional control and attitude. Now of course the next question is कि इंडिया में कौन कौन से schools APPI certified हैं. So जहाँ से मैंने किया है which is Temple Pilots is the 9th school in the whole world जो APPI certified है. In fact Temple Pilots is a 5-star rated school also और जो वहाँ के certified master instructor हैं is the only one in India. Although India is kind of designed for paragliding. We have the Himalayas in the north, we have Sahyadri ranges, we can fly by the coast, we can fly over Rajasthan. For sure, one of the best schools to learn as you get your APPI license, as well as instructors are APPI qualified, which means their skills, knowledge and everything is just perfect. 10 on 10. Seriously guys, यार 10 on 10 मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रही हूँ. यहाँ पे भी नंबर है, so if you want to reach out to them, just do it. Now talking about my journey as a pilot, मैंने 4 दिन का कोर्स किया था P1 का. आप 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो बट हमने थोड़ा एक दिन एडिशनल लेकर बफर लेकर उसको अच्छे से करने का सोचा था. बट इफ यू वांट you can do P1 in 3 days and this is how the training looks like. Day 1 starts with a briefing and introduction where you explain each other about your background and also the expectations from the course. My name is Avi. I am an ex-Air Force fighter pilot and I have been doing paragliding for the last about 25 years. Temple Pilots is about 22 years old. So यहाँ पे हमारा briefing session हुआ है और अभी हम इस रूम में आए हैं जहाँ पे हमें अपना किट मिलने वाला है with our names on it. After that you are given the kit as per your weight, जिसका weight 10 से 12 kg है and every day you have to lift this and go till the tempo from where you reach the paragliding site. And this is how the training looks like. This place known as a training hill and we are using this site for the ground handling today. Guy flying. I will catch you. Apart from understanding the parts of canopy, the instructors will teach you how to wear your harness and later on how to inflate for ground handling. Now what exactly is ground handling? It is basically running with your canopy inflated and trust me, it is very hard, harder than flying. This is very essential to feel the glider, how to control the glider when it goes left to right. Very difficult and physically challenging but equally important so that you can feel one with the glider. Hey, how's it? My God, I felt like उड़ जाओगी इसी के साथ में. सारा ज्ञान जो हमने प्राप्त किया था ना वो 2 सेकंड में उड़ गया.
So we have finished our dry run. Now it is time to understand our glider. अभी हम इसको बिछाएंगे and we'll do a trial version and I hope I do it properly. And we do this again and again until our instructors are sure that we are ready for level 2, which are the hops. How was it? First run, it was awesome. So हम लोग आ चुके हैं वापस अपने बेस पे और हमें ये लॉग शीट मिली है जिसमें हमें अपना हर डे असेस करना है कि हम अच्छे थे या हमें रीट्राई करना है दोबारा से. मैं सब में excellent मार्क. So this was all from day 1. Debriefing and simulator practices is a very nice way to recollect and rethink of what went wrong, what you can do better the next day, and I think the most important way to learn better. So guys, welcome from day 2. आज हम थोड़े हॉप्स लेने वाले हैं. थोड़ा ग्राउंड हैंडलिंग के बाद हिल पे जाएंगे. लेट्स सी थोड़ा सा फ्लाई कर पाते हैं नहीं. Plan is for you guys. Okay, you can start opening your glider by yourself, and then wear helmet harness. Day 2 is about polishing the previous day's skills, and if we are able to do it well, we will be clear to move to level 2, which are hops. Break more. Yeah. Don't apply too much. Hold some pressure like that. मैं पहले गिरती मुझे चढ़ जाता. We were a little bit panic situation में. Oh shit, it's pulling me. You should have done this. उड़ गई तो नीचे कैसे आएंगे is exactly what was happening in my head, and the nervousness is real. The only motivation is to see other people doing their first solo. Wow. Look around, feel good, join, let's start a left turn. Wow. Turning, keep turning it. Okay. Nice. Dude, I just had goosebumps. Wow! Woo! And then you know कि ये तो भाई करना ही है. You nailed it. Okay guys, so today is day 3 और आज हम हिल टॉप से उड़ने वाले हैं. बट ट्रिकी पार्ट ये है कि आज वेदर खराब होना स्टार्ट हो गया है. 40 to 50 किलोमीटर्स की स्पीड पे विंड्स चलने वाले हैं आज आफ्टर आई थिंक 9ish. So we have like a window of 1 hour. आज ही जब हम उड़ने वाले तभी वेदर खराब. So it's going to be very tricky to fly. Hopefully हम टेक ऑफ कर पाएंगे. Pre-flight check done, ready for takeoff. Radhika. Amazing guys. थोड़ा डर लगता है जैसे ही ऊपर जाते हैं, बट जब एक मोमेंटम आ जाता है it's one of the best feeling. So it's my second hop और wind बहुत ही ज़्यादा strong होती जा रही है. It's crosswind. Crosswind means we are not going into the air, so it's a little bit tricky. All the best to me. Nice. Whoa, super. Practicing hops is very very important so that you can get more and more comfortable, because you cannot just go like this and start flying solo. So people, आज है हमारा लास्ट डे और आप जैसे देख सकते हो हम बहुत ही जल्दी उठे हैं क्योंकि विंड्स बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं. इट्स अ वेरी ट्रिकी डे. अगर आज फ्लाइंग नहीं हुई तो हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, एंड ऑलरेडी विंड्स स्ट्रांग हो चुके हैं. सो वी आर वेरी होपफुल. लेट्स सी. आज हमें हिल से फ्लाई करना है और अगर वो सक्सेसफुली हो गया वील बी ऑफिशियली कॉल्ड पायलट्स. Nice. Sit back, relax, take a deep breath, slowly start a left turn. Okay, now right. Woohoo! Well done! I want to cry. It was so Congratulations good. and lovely landing. Super proud of you, babe. Thank you. Paid off. You did so well. I want to cry right now. You should. I cried after my first time. These are very pure moments, you know, in life. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Oh my God!
Hi, I'm Anita, and I'm so excited that Radhika and Suman both did their solo flights. They are now pilots. You have to call them Pilot Radhika and Pilot Suman. I'm proud because they had a very beautiful journey. I can totally see the courage and guts these two girls have, and it makes me so proud. And today they flew. They had the patience, they had the trust to just wait. So I'm like so proud of them. Women in India have to ask for so many permissions to do something especially related to adventure and outdoors, and these two are literally leading the way and inspiring so many others because of the position they have, because they are influencers. And Suman and I are officially pilots. We are finally getting our P1 certification. Abhi hum wait kar rahe hain. This is the t-shirt that we have got and super excited. मेरे को भी मिली, सिर्फ इसको नहीं मिली. You come to the end of your course, and I think it's been a fantastic journey for you guys. We're very impressed with your journey. It was not easy. It's an advanced adventure sport. Very well deserved. Please put your hands together. Radhika, please come. Congratulations. So most of you will be like कि सिर्फ 3-4 दिन में पैराग्लाइडर बन जाते हैं, बस इतने दिन का ही कोर्स होता है. बट ऑफ कोर्स टू बी अ बेटर पैराग्लाइडर एंड टू फ्लाई अ लिटिल मोर बेटर आप और कोर्सेज कर सकते हो P1 के बाद. सो आफ्टर P1 देयर इज P2 एंड CC जो आपको APPI 2 सर्टिफिकेशन दे देगा, और P2 CC आप 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद है लेवल 3 विच इज P3 जिसके लिए आपको 10 दिन और चाहिए, and then you can go further and do your APPI 4, APPI 5. Now coming to the cost of all these levels, जो P1 है, जो मैंने किया था 4 दिन का कोर्स, वो है 20,400 प्लस GST का. बट अगर आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो वो है 15,800 प्लस GST. 3 दिन में आइडियली वैसे रेकमेंड नहीं करूंगी, बट इफ यू थिंक यू आर अ क्विक लर्नर देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर कंबाइनिंग P1 एंड P2, द कॉस्ट इज 37,800 प्लस GST. CC को मिलाकर 54,000 प्लस GST, और P3 which is level 3 को मिलाकर is 1,02,000 plus GST. Of course, doing APPI 1, 2, 3 is a little expensive, so I'll suggest you, highly recommend you guys कि at least give P1 a shot 3 days या 4 days according to the budget and according to the time you have, and उसके बाद you can decide whether you want to go further or no. Apart from this, the accommodation and meals are sorted by Temple Pilots. आप वहीं पर ही रह सकते हो और खाना भी खा सकते हो उधर ही. Temple Pilots का खाना is like घर का खाना. You will not find anything better than Temple Pilots का खाना. अब है लंच टाइम और क्या खाना बन रहा है, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और खाना देखकर एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है. I don't mind going especially to Temple Pilots just for their food. The cost of accommodation is 700 per night for a dorm, 1,500 per night for a private room, which is very, very comfortable. And meal charges are 650 per day, which includes breakfast, lunch and dinner. Now, how safe it is, to be honest, all the adventure sports have their own risk. आप कोई भी अगर adventure activity कर रहे हो, it comes with a certain risk. But if you are listening to the instructions of your instructors, then definitely you are safe. उसके अलावा टेम्पल पायलट्स आपको कभी भी पैराग्लाइडिंग नहीं करने देगा अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है. सो रीच आउट टू देम फॉर द इंश्योरेंस नंबर. दे कैन करेक्ट यू टू द राइट इंश्योरेंस कंपनी जो आपको आपके दिन के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगा. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पीपल हैव इज व्हाई कामशेत, व्हाई नॉट बीर बिलिंग और मनाली. सो आई फील कामशेत इज द perfect place to learn. Kamshet is among the top destinations for paragliding in India. It is also the main hub for paragliding training in our country. The hills are safe for flying, which basically means हम जैसे beginners लोगों के लिए it is safe to learn. You enjoy the beauty of Sahyadris, और in fact Kamshet एक hub है paragliding schools का, और Temple Pilot is one of the first schools in India. Now talking about months. Of course, मानसून में आप पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते. विंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आप पैराग्लाइडिंग कब कर सकते हो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर मिड ऑनवर्ड्स, प्रेफरेबली नवंबर, एंड इट गोज अप टू whenever the monsoon hits, which is May and June. So plan your paragliding activity and training during these months. So paragliding has age and weight limit.
The starting age is 15-year-old, and even if you are 80 or 90 or 100 years old, you can still paraglide. Weight is from 45 kg to 100 kg. Now coming to other places, of course, which is Beer Billing and Manali. I think Beer Billing is a little advanced. मैंने अभी तक Beer Billing में solo fly तो नहीं किया, but मनाली में मेरे पास last year का experience है, जहाँ पे मैंने 3 दिन का course किया था और मैं आगे continue नहीं कर पाई थी because the weather got really bad. Monsoon आ गए थे. But Solang is another place where you can learn, you can connect to Ajay sir. अगर आप कामशित नहीं जा सकते, you can contact Ajay sir. बुरवा में you can stay in Zostel Manali, which is a very comfortable stay. मैं वहां पे रुकी थी और मैंने 3-4 दिन का पैराग्लाइडिंग का कोर्स किया था with Ajay sir. So Ajay sir has direct contacts with temple pilots. So you can get trained by Ajay sir and then go to Kamshet to give your exams and get your license. आपको टेम्पल पायलट्स एनी विच वे जाना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, बट ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर बोथ द प्लेसेस. अजय सर के साथ आप थोड़ी दिन ट्रेनिंग कर सकते हो. यू कैन फिनिश द कोर्सेज विद देम, बट यू हैव टू कम बैक एंड गिव योर एग्जाम्स एट टेम्पल पायलट्स. इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस थ्रू द APPI लेवल, और अगर आपको APPI लाइसेंस चाहिए, देन दिस इज अनदर वे टू गो अबाउट इट. बट आपको कामशेत एनी विच वे जाना पड़ेगा. बट गुड थिंग इज यू कैन एक्सप्लोर मनाली. So right now I am at P2. मैंने P2 clear कर दिया है, तो मेरा बचता है CC and APPI 3. And the plan is to do both these courses with temple pilots. And once I get the APPI 3 license, I'll go to Manali and to Beer. And APPI 4 में basically आपको flying hours चाहिए, तो आप कहीं पे भी fly कर सकते हो. And जब आपको उतने flying hours मिल जाएंगे, you can qualify to APPI 5. So that's the plan, and that is what you can do also after your APPI 3. Paragliding is the closest humans can get to the feeling of flying like a bird. It is one of the most liberating feeling, and the freedom you get after stepping into the sky is beyond words. I hope this video was helpful. और आप paragliding as a passion or as a profession choose करो. बाकी अगर आपको कोई भी questions है, you can reach out to Temple Pilots. Links are in the description, contact details are in the description, or you can comment नीचे and I'll try my best to answer it in the best possible way. Baki, like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye, take care.